एआई 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 सबुआड़े एआई ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। କିଏ କହୁଛି ଏଆଇ ମୋର ଜବ୍ ଖାଇଦେବା, କିଏ କହୁଛି ଏଆଇ ଶିଖିବାର ଲାଗି ପଡବ। ହାय, ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଅନୁଭବ ସାହୁ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଜିପିଟି। Let's begin our chapter. Chapter 1: Basic understandings of all the concepts that is related to AI. This video is designed for beginner level. ଯଦି ତମକୁ ଏଆଇ ବାବଦରେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ ନା, କେନ୍ ଜାଗାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବାର୍ ଲାଗି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛ, this is exactly where you are supposed to be. ତମେ ଯଦି ସ୍କୁଲ କି କଲେଜରେ ଅଛ and you want to pursue a career in Gen AI, this is the right place for you. ई ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁ କନସେପ୍ଟ के ସମ୍ବଲପୁରୀ ସ୍ଲାସ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବାର ଲାଗି ଟ୍ରାଏ କରବା, and we will be going through every technical definitions in English because at the end of the day everyone wants to crack an interview. You want a job, right? Your goal should be 10 LP or 20 LP. If that's the roadmap, you are at the right place. ସମସ୍ତେ चैट जीपीटी यूज करूଛ, ପିଲାଠୁ ନେଇକରି ବୁଢ଼ା ତକ୍। ବାକି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି चैट जीपीटी ଭିତରେ ଚାଲୁଛେ କାଣା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଲେଖୁଛ चैट जीपीटी ତମକେ ତାର ବଦଲାରେ ଗୋଟେ ରିପ୍ଲାଏଟେ ଦଉଛେ। କିଏ ସେ ରିପ୍ଲାଏ ଦଉଛେ, ରିପ୍ଲାଏଟା କେମିତି ଆସୁଛେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି चैट जीपीटीଟା କାଣା, ଏଇଟାକେ ଆମେ ବୁଝିବାର ଲାଗି ଟ୍ରାଏ କର। What exactly is AI? ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୁଝିପାରୁଛେ, ଭାବି ପାରୁଛେ ଆଉ କାମ କରିପାରୁଛେ, that computer is using AI. The technical definition would be: artificial intelligence is the ability of a computer or machine to perform tasks that normally require human intelligence, like thinking, learning, understanding language, and making decisions. ଯାହା ବି ସ୍କ୍ରିନରେ ଆସୁଛେ ସେଟା ଭଲସେ ଦେଖ ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଟ୍ରାଏ କର, so that you would be recalling all those definitions in your mind. We don't have to by heart it. आमके कॉन्सेप्ट बुझबार अच्छे। once कॉन्सेप्ट बुझीगले कैनसी भी इंटरव्यूअर के तुम्हें तमर आंसर पिच करि पारो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टा से पार्ट है जेन थेर लगी गोटे कंप्यूटर टे गोटे ह्यूमन हिसाब रे बिहेव करबा। ह्यूमन हिसाब रे केंती बिहेव करबा, से भाभी पारबा, बुझी पारबा और डिसीजन नहीं पारबा। ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स केंता थिला, ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स फॉलो फिक्स्ड प्रीडिफाइंड इंस्ट्रक्शंस, नो लर्निंग, नो अडॉप्शंस। ट्रेडिशनल प्रोग्राम मान के फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन दिया जाउथिला, जेनथिर बेसिस रे से काम करूथिला। सपोज गुटे पिलाटे अछि, तार नाम होचे श्याम। श्याम इज ए ट्रेडिशनल कंप्यूटर। श्याम के जदि कहा जिबा के जाय करी पानी ग्लास टे आन, ताके कंप्लीटली स्टेप बताबार लागि पड़बा। ठिया उठ, 10 कदम जा, पानी बोतल धर, उल्टी पड़, 10 कदम वापस आ, हाथ पानी बोतलटा मते दे दे। These are the fixed set of instructions that a computer should follow. इटा हो जे ट्रेडिशनल प्रोग्राम। एआई सिस्टम काना हला, भाबिनियो आउ गोटे पिलाटे अछि राम। राम के मैं कहमी पानी टिका आनी दे, ताकि इटा इंस्ट्रक्शन दबा लगे नहीं पड़े जे सीधा उठ, 10 कदम जा, पानी बोतलटा धर, आनी दे, नहीं। राम तार दिमाग यूज करबा। राम ठिया उठवा, जीवा, पानी बोतलटा खोजबा, आनी करि दबा। AI systems learns from data, recognize patterns and make decision on their own. ଯେମିତି ଶ୍ୟାମ କାଣା କରୁଥିଲା, ତାର କିଛି ନିଜର ବ୍ରେନ୍ ନାଇଁ ଥି, ତାର କିଛି ନିଜର ଡିସିଜନ ନାଇଁ ଥି, ତାକେ ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ତାକେ ହେଟା କରବାର ଲାଗି ପଡୁଥିଲା। ଯେନ୍ତାକି ଶ୍ୟାମ ଯଦି ପାଣି ବୋଟଲ ଆନି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ତାକେ ପାଣି ବୋଟଲ ନାଇଁ ମିଳିଥିଲା ତ ସେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାକି ରାମ ଯଦି ପାଣି ବୋଟଲ ଆନି ଯାଉଛେ ଆଉ ତାକେ ପାଣି ବୋଟଲ ନାଇଁ ମିଲୁଛେ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖବା। So this is the main difference between the traditional programs and AI systems. AI systems are निजर brain थीसी, traditional programs रो तर brain नहीं थे। I guess we are clear with artificial intelligence. Let's proceed to the next slide. आमे AI जानी करे कि नहीं जानी करे, आमे हमर लाइफ रे यूज करूछु। केमती यूज करूछु, आमे यूज करूछु वॉइस असिस्टेंट्स। गूगल सर्च हे गला, instead of typing we are using it to speak and we are getting the results. Face unlock, फेस अनलॉक तुम्हार फोन आईफोन के एंड्रॉइड के यूज करूछ सथरे या तो तुम्हार पैटर्न अछि या पासवर्ड अछि या फेस लॉक अछि। डीप डाउन इन फेस अनलॉक देयर समवेयर AI hiding deep beneath. We might not be able to exactly see it, but AI is there.
recommendations Netflix କି Amazon Prime କି Hotstar ତମେ ମାନେ ଯଦି ୟୁଜ କରୁଥିବ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖବ ସେ ରିଲେଟେड ମୁଭି ମାନକେ ତମକେ ସଜେଷ୍ଟ ହୋଉଛି. How are these things getting suggested for you? In the backend, AI system is running. It's capturing all the data of that particular movie which you have watched before, gathering certain informations from it and suggesting you movies. This is how AI system works. Chat GPT. Everyone is using Chat GPT. ସମସ୍ତେ use କରୁଛୁ. But Chat GPT is exactly not AI. It's a chatbot application which uses AI to answer your query. है ना? Backend AI systems ମାନେ run होଉଛି. ଯେ ତମେ ଯାହା ବି questions ପଚାରୁଛ ତାହାକେ ସେ answer କରୁଛି. ଆମେ टिप बाय टिप ସବୁ ଯିମା. ଆମେ AI କାଣା ବୁଝି ସାରିଲାନ. ଆମେ ତାର ପରେ Chat GPT के भलसे बुझिमा. Models काଣା बुझिमा. LLM काଣା बुझिमा. You might have heard these terms, but you might not be familiar with. Don't worry, we will go term by term, definition by definition. First, हम our language के बुझे लगे try करना, and then we'll go for the technical definitions and all. Okay? What is an LLM? LLM. LLM stands for Large Language Model. LLM के जीवार आगरू हमें गोटे example through डेटा बुझे लगे try करो. Suppose गोटे पिलाटे अच्छे. पिलार नाम होचे पिंटू. पिंटू काना करिचे. पिंटू बहुत सारा आर्टिकल्स पढ़िचे, डॉक्यूमेंट्स पढ़िचे, न्यूज़पेपर पढ़िचे, बहुत सारा बुक्स पढ़िचे, बहुत सारा तार पाखरे नॉलेज अच्छे. हैला. He has gathered a lot of knowledge from different types of source. पिंटू के जेतला में पचरोचो, what is the capital of India? से कहूचे दिल्ली. ई आंसर टा से पहला केन. काहे से बहुत सारा जिनस पढ़िचे. Exactly, LLM follows this process. LLM models माने बहुत सारा एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी दिसन और से इंफॉर्मेशन से समान ट्रेंड ही दिस जेंथि लागि कि हमें जहां भी क्वेश्चंस पचरोजु तार बेसिस रे से हमके ह्यूमन लाइक आंसर ट दोउछि. We'll go for the technical definitions. What is an LLM? LLM stands for Large Language Model. A large language model is an AI trained on a massive amount of text data, books, websites, research papers to understand and generate human language. To understand and generate human language. Good human beings संगे conversation कले जनता conversation हवार कथा. Good LLM संगे conversation कले भी same feel से. Just because it's trained with massive amount of data and it's trained to respond like a human being. Main jinso LLM. LLM don't know facts. They predict the most suitable response based on patterns learned in training. LLM मान के ट्रेनिंग फेन रे बहुत सारा एक्सटेंसिव डाटा दिया दिसी जेंथि लागि समाना नेक्स्ट टोकन के प्रेडिक्ट करि पारे. टोकन सिस्टम ता हम पढमा जते बोला आके बुझि परना. यहाँ दे भाभी पारता है कि समान नेक्स्ट वर्ड टा गेस करि पारे. लाइक द कैपिटल ऑफ इंडिया इज तो समान बहुत सारा ऑप्शंस मिलबा जेन ऑप्शंस थ्रू दिल्ली टा 98 या 99% मैच खाएबा. तो से फिल इन द ब्लैंक्स रे समान आने के दिल्ली टा पुट करबे. So the capital of India is dash. LLM is going to answer with Delhi because the LLM is trained on extensive and huge amount of data. LLM concept clear है ला. पहला में करना बुझना AI. AI टा करना human type रो brain jar थिबा. जे भाभी पारो थिबा. बुझी पारो थिबा. काम करी पारो थिबा. LLM टा करना गुड एंदा मशीन टे या फिर एंदा मॉडल टे ताकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन देके ट्रेन करा है जी. बहुत नॉलेजेबल. AI हमके क्लियर होला. LLM हमके क्लियर होला. LLM रो L रे हम फोकस करबा. L stands for large. Trained on billions of words. जेंटा कहउतिली बहुत ही एक्सेसिव इंफॉर्मेशन रो ट्रेन है जी. Processed across millions of documents. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारा ई-बुक्स, बहुत सारा नॉलेज ताकि दिया है जी. बहुत सारा जिनिस के ट्रेंड रही जेंथि लागि कि हम किछि भी क्वेश्चंस पचराले तार मोस्ट प्रेडिक्टेबल आंसर हम से दे पारो. पावर्ड बाय थाउजेंड ऑफ GPUs and CPUs रो अलग कांसेप्ट हम सेटा पर पढमा. दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर नाउ.
because this chapter covers only the basic principles of AI. So that if someone asks you basic questions, what's AI, what's ChatGPT, what is LLM, you can answer accordingly. LLM kana kari parva? What can LLM do? What can large language models do? Answer questions and explain concepts. ଆମେ କିଛି ବି क्वेश्चन ପଚାରୁଛୁ ସେ ଗୋଟେ ଆମକୁ आंसर ଦଉଛି ଆମେ ତାକେ explain करबार लिए कहूଛୁ it can explain in detail. LLM can write code, emails and stories. Most of the software engineers are using ChatGPT to write their mails. LLM can translate languages. You go to ChatGPT, write a sentence in English, ask it to translate it in Odia, summarize long documents. This is the basic principle LLM, where it was introduced for summarizing long documents by using attention mechanism. Attention mechanism এটা এটাকে বহুত deep है সেটা ଆମେ ପରେ ବୁଝିମା तो ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାହାକେ ଦଉଛୁ ସେଥିରେ ବହୁତ 10 ପେଜର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଓଭରଅଲ୍ କାଣା ସେ 10 ପେଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ସମରାଇଜ କରି ଗୋଟେ 5-6 ଲାଇନ ଆମକେ ଦେଇପାର generate creative content. Suppose you are asking ChatGPT to generate something for you, write a YouTube content for me or any Instagram blogs. It's going to generate content for you. Popular LLM, GPT, Gemini, Claude, DeepSeek, Llama, Mistral. LLM ଆମେ ଲାର୍ଜ କାଣା ବୁଝି ପଡନା ଆମେ ଲାର୍ଜ କାଣା ବୁଝି ପାରିଲା language ବୁଝି ପାରିଲା ମଡେଲ ବୁଝି ପାରୁଛି. In LLM, large stands for बहुत सारा extensive information से trained ହେଇଛି language जेंटा कि से बुझे पारुଛି. Model, what exactly is a model? ଆମେ ଯେନ୍ତା ପିଣ୍ଟୁ के ପଚାରୁଛୁ କିଛି ବି question तो पिंटू ଗୋଟେ आंसर ଦଉଛି କାଣା आंसर ଟା पिंटू ଦଉଛି ହଁ पिंटू आंसर टा केन पाଉଛି आंसर टा प्रोसेस केन होଉଛି ब्रेन. Exactly, model behaves as the brain of the LLM. Large language model hochi that brain where all the informations get processed and it provides the output. Model ta anta sir bujhare jodi pintu hochi LLM gote human being hochi gote LLM to tar brain hochi model where all the information is stored. So model is basically the brain of LLM. Okay, let's go for the technical definition. What is a model? A model is the trained brain of an AI system, the part that actually performs thinking and generate answers. किसी भी क्वेश्चन जदि गोटे ह्यूमन बीइंग के पचरा होचे एक्चुअल प्रोसेसिंग टा जेन जगह रे होचे केन जगह रे होचे ब्रेन रे होचे. बिफोर ट्रेनिंग द मॉडल नोस नथिंग, इट्स अ ब्लैंक स्टेट. गोटे मॉडल ट्रेन करबार आगु तर ब्रेन खाली थिसी. ड्यूरिंग ट्रेनिंग इट लर्न्स पैटर्न्स फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा. ट्रेनिंग टाइम रे गोटे मॉडल टे बहुत किछि जिंस सिखसी जेनता गोटे छुआटे छोट रु बड़ हेसी और छोट रु बड़ हला टाइम रे बहुत किछि जिंस सिखसी बहुत किछि जिंस तार ब्रेन टा प्रोसेस करसी बहुत इंफॉर्मेशन स्टोर करसी. एग्जैक्टली मॉडल भी ट्रेनिंग फेज धीरे धीरे करी so बहुत किछि जिंस सिखसी. आफ्टर ट्रेनिंग it uses learned knowledge to generate predictions होचे इन इंपोर्टेंट कीवर्ड. गोटे लार्ज लैंग्वेज मॉडल ले केबे भी तुमके 100% श्योर ही गोटे आंसर टे नहीं दी से 99.9999% प्रेडिक्ट करसी that this answer might be the most appropriate answer to the asked question. This doesn't has to be 100% sure. It just predicts the next token, I mean the answer. जेन इन्फॉर्मेशन रे से ट्रेंड ହେଇଛି ଆମେ जेन क्वेश्चन पचरोछु तार हिसाब रे तार भितरे ताके 10 आंसर जनरेट हेसी तार भितरु से मोस्ट प्रेडिक्टेबल आंसर मोस्ट जेन आंसर के हिट हितेबा से आंसर टा से आन कर देसी. So generally LLMs are predictable machines. Okay, this doesn't mean that it's going to provide you accurate answer. It might 99% of the time give you a right answer, but deep down it predicts the answer. ଯେତେବେଳେ ChatGPT ପहला ବାହାରି ଥିଲା I guess ताके सेप्टेम्बर 2021 तक ही आंसर मन थिला. लाइक तुम जदि ताके लेटेस्ट क्वेश्चन टे पचरोतला ChatGPT के से तुमके साफ साफ कहि देतला जे आई हैव ओनली नॉलेज टिल दिस पर्टिकुलर टाइम डेट तार आके से ट्रेंड ही नहीं तो अप टू ए सर्टेन डेट ही से ट्रेंड थला. बाकी लेटेस्टली एबे
MCP की यूज करी बहुत सारा प्लगइन्स आसीगलान जेनटा कि वेब सर्च करि पारुछे. These are all complicated subtopics. We will be covering it in next chapter. For now, let's keep the basic fundamental clear so that it helps us to understand the next part very clearly. You're getting my point, what I'm trying to say. ଗୋଟେ ଘରର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେବା, ବିଲ୍ଡିଂ ଯେତେ ବି ବନ କେବେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ. ଯଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହିଁ ଖରାପ ଥିବା ତମେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ବନ କେବେ ନା କେବେ ତ ଭାଙ୍ଗବା ହିଁ. ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ମୋର ହିସାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରବାର କଥା. स्टार्टिंग बेस नॉलेज जदि वंस तमर मैथ रो स्ट्रांग हे गला तुमके आके मैथ इजी लागते जीवा. सेम गोस फॉर जेने इधर जदि बेसिक फाउंडेशन नॉलेज जदि स्ट्रांग हे जीवा आके आके जहां भी लेयर जीवा सेटा एड ऑन कर देला आराम से जीवा. तो हमके हमर पहला गोल हो जे बेसिक्स टा स्ट्रांग करो चैप्टर 1 रे. देन वी विल बी मूविंग टू डिफरेंट चैप्टर्स एंड लर्निंग डिफरेंट आइटम्स. हला आके बढ़मा. तो मॉडल हो जे बेसिकली ब्रेन. जनता कि एप्पल गुटे कंपनी आईफोन 16 प्रो हो तार मॉडल. से गूगल गुटे कंपनी जेमिनाई हो तार मॉडल. ओपन एआई गुटे कंपनी GPT-5 GPT-4o एटा हो तार डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स माने. यानी कि एंट्रोपिक हो कंपनी क्लॉड सोनेट हो तार मॉडल्स. क्लॉड फेबल क्लॉड मिथोस बहुत सारा मॉडल्स माने बाहर पड़ना. तो दिस आर द लिस्ट ऑफ कंपनीज एंड दिस आर द लिस्ट ऑफ मॉडल्स. मैं चाहूँ जे तुम मैंने सेल्फ सर्च कर मैं चाहूँ जे तुम मैंने गूगल के जो राइट डाउन डिफरेंट कंपनीज नेम एंड चेक आउट द मॉडल्स. जेन मॉडल माने ये बाहर होची सेटा केते बिलियन पैरामीटर रे ट्रेंड होची बिलियन पैरामीटर्स. एटा माने फ्यूचर कांसेप्ट माने एटा नेक्स्ट चैप्टर में पढमा. एटा भाबिनो जे केते इंफॉर्मेशन रे स्टोर होची. पहला जदी 1000 वर्ड रे ट्रेन हितबा नेक्स्ट मॉडल 1 लाख वर्ड रे ट्रेंड होची. तार नेक्स्ट मॉडल 1 crore वर्ड्स रे ट्रेंड होची. And the model gradually models are getting stronger and stronger day by day. They are getting trained with billions of parameters and they are doing a fantastic work. So I suggest you go to Google and do some research, because until and unless you research it, you wouldn't develop a self desire to learn in AI. Okay, if you want to pursue a career in this field, you would have to do some research by your own. क्योंकि कहते लगी इथरा तुम इंटरेस्ट बढ़ा और तुम नुआ जिनस मैंने जानब जेनटा कि तुमके बहुत एक्साइटिंग फील हवा आउ भी काम करवा ले मजा लग. धीरे धीरे पढ़ो भल से पढ़वा मस्त पढ़. सिंप्लीफाई करवार लगी चैट जीपीटी रे आउ थे बुझी दूचे. आम चैट जीपीटी खुली कर जदि पचरुचु व्हाट इज 4 5 सर आंसर दूचे 20. डीप डाउन काना हो चैट जीपीटी हूँ गोटे चैटबॉट LLM एप्लिकेशंस. सेटा गोटे एप्लिकेशन टे आम जो ताकि गोटे क्वेश्चन टे दौचु से क्वेश्चन के नहीं जाऊे से पर्टिकुलर मॉडल GPT-5 हो या GPT-4 हो कि से क्वेश्चन टा दौचे जेनटा कि ब्रेन प्रोसेस कर आंसर रिटर्न बैक करुचे एप्लिकेशन के जेनटा कि आम फ्रंट एंड व्यू कर पारुछु. सो व्हाट एग्जैक्टली इज चैट जीपीटी. बहुत लोग के लगसी बहुत कण ऑलमोस्ट सबके लगसी चैट जीपीटी और जीपीटी दुईटा सेम जिनस. यू आर कंप्लीटली रॉन्ग. दुईटा अलग अलग जिनस. चैट जीपीटी होचे इंटरफेसटा आमे जेने कथाबार्ता आसो आमके जहाँ दिससी. जीपीटी होचे तार ब्रेनटा जेनटा कि एग्जैक्टली प्रोसेस करसे इनफॉरमेशन के है ना. चैट जीपीटी होचे इंटरफेस जेनथरे के आमे इंटरैक्ट करसो. जीपीटी होचे ब्रेन जेनटा कि हम क्वेश्चन के प्रोसेस करसी और हमके आंसर टे देसी. लेट्स गो फॉर द टेक्निकल डेफिनेशन. कहते लगे तुम भाइबार या इंटरव्यूअर संबलपुरी के ओडिया रे तुम बुझी ना पारो although you know the concept but you would have to say technical definitions. So let's go there. What is ChatGPT? ChatGPT is an AI chatbot application developed by OpenAI. It uses GPT models to communicate with users in natural language. Natural language होचे कीवर्ड से बहुत सारा जीपीटी मॉडल्स यूज करसी. जीपीटी मॉडल्स एग्जांपल माने काना जेमिनाई फ्लैश 2.0 GPT-5 GPT-4 इटा माने होजे मॉडल्स माने हला. चैट जीपीटी होजे गुटे एआई चैटबॉट एप्लिकेशन. चैट जीपीटी the application, the interface you see and type into, whereas GPT the model is the brain working behind the scenes.
ଏବେ ଚ୍ୟାଟ୍ ଜିପିଟି ଆଉ ଜିପିଟି ଭିତରେ ବୁଝିପାରିଲ କେନ୍ତା କରି ଚ୍ୟାଟ୍ ଜିପିଟି ପ୍ରୋସେସ୍ କରସି ଯେନ୍ତା କି ମୁଁ ବୁଝିଲି यूजर asks you questions chat gpt receives it send it to gpt model generates the answer like the brain generates the answer and the answer is displayed on your screen. It's as simple as that. Okay, the user never interacts directly with the model. ChatGPT acts as the messenger between you and the AI brain. ଯେମିତି କି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ସାଙ୍ଗେ କଥା ନାଇଁ ପାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବା ଯେନ୍ଟାକି ସେ କାନୁ ଶୁନି କରି ସେ ଜିନିଷଟାକେ ବ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରସି ସିମିଲାରଲି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମଡେଲ GPT-5 या GPT-4 से हमें कथा नहीं हमें चैट जीपीटी इंटरफेस थ्रू मॉडल से कम्युनिकेट करस you me all together let's crack a job let's aim for 10 LPA so that 10 LPA का जब जब अपने पास होगा तो हम 20 LPA को एम कर पाएंगे at the end of the day everyone wants money who doesn't you me everyone is working for money चैट जीपीटी को बुझबार लागि हम गोटे होटल रो एग्जांपल नो मो गोटे होटल के गलु वेटर को डाक एक्सक्यूज मी आम ताके ऑर्डर टा देलु से ऑर्डर टा नहीं करी गला से शेफ के देला शेफ से ऑर्डर हिसाब रे खाना बनाला वापस शेफ के देला शेफ आम के आनी करी खाना टा देला आम डायरेक्टली जे करी शेफ के कहू जे मते खाना चिकन बने करे दे that would be possible but we aren't that uncivilized to do such kind of works right तो हम डायरेक्टली वेटर से कथा हम exactly chat gpt भी इस सिस्टम फॉलो करू छे the restaurant analogy the easiest way to understand the relationship between you chat gpt and gpt is to think of a restaurant customer you the user you place the order ask the question तमे हो जो यूजर तमे से जाई करी गोटे प्लेट ऑफ किछि भी सपोज यू आर ऑर्डरिंग a plate of chili chicken in a waiter हो जे chat gpt takes your request and delivers the result वेटर टा नहीं करी शेफ पाक के जीवा शेफ के तमर ऑर्डर टा देवा शेफ टा की शेफ टा होची जीपीटी मॉडल प्लस द रियल वर्क प्रिपेयरिंग द आंसर वेटर रो काम काना है तमर ऑर्डर नहीं करी जीवा शेफ के देवा शेफ बने देला खाना वापस आनी करी देवा तमके सेम चैट जीपीटी रो काम हला से तमर क्वेरी नहीं करी जीवा मॉडल के देवा मॉडल आंसर जनरेट करबा से तमके क्वेरी रो आउटपुट आनी करी देवा अब इन फूड the answer served back to you through chat gpt suppose whatever questions you're asking and you would be getting an answer your food acts as an output hala customer ho je tome waiter ho je chat gpt chef ho je gpt model food ho je the output the answer so in chapter 2 we will be using python and a bit of langchain to interact with models wouldn't that be interesting तो मैं जनता चैट जीपीटी के हाई लिखु जो और तुमके आंसर में हाई या फिर हाई दिस इज चैट जीपीटी हाउ कैन आई हेल्प यू टाइप आंसर मिलु जे एग्जैक्टली हमें सेम जिनिसटा करमा बाकी चैट जीपीटी एप्लीकेशंस खुली करे नहीं छोटे कोड लखमा जंतरी के हमें हाई रेस्पॉन्स टा पठामा और से तब तेला रेस्पॉन्स टा कैप्चर करमा और डिस्प्ले करमा so in the next chapter we will be doing programming stuffs using python because that's my favorite language it might be yours too if you pay attention to each other ama concept memorize karina asi we will be understanding the concept and also the technical definitions of those concepts so whenever an interviewer is going to ask you any sort of questions you should be short on ready to answer that that's the goal I don't believe in by hearting concepts roti dio definition या फिर दिमाग रे घुसी दियो घुसा पड़ना है हमर द्वारा concept पूछो निजर लैंग्वेज एक्सप्लेन करो वेरियस एग्जांपल्स ने कर कांसेप्ट बुझो जेंति लागि तमे आउ का की बुझी पारो बुझो सीखो डिलीवर करो okay thank you so much for watching guys do like comment maybe subscribe if you like this channel also let me know in the comment section कि बहुत स्लो जाउ छे बहुत धीरे जाउ छे या फिर बहुत ही फास्ट जाउ छे या फिर कैन कांसेप्ट तुमके डाउट हो छे आई ट्राई टू solve it in the next chapter. So this is the end of chapter 1, the basic principles of AI. Thank you so much for watching guys. Stay tuned. My name is Anubhav Sahu, signing off.